So there are several important factors that determine supply of a commodity, and a change in any of these factors will result a change in supply of the commodity. So followings are the major determinants of the supply of a commodity in the market. The first is its own price, means price of the given commodity. This is the most important factor in determining the supply of a commodity. So as a general rule, price of a commodity and its supply are directly related. The higher the price, the larger will be the supply, and lower the price, lower will be the supply. It happens because at higher prices there are greater chances of making profit, and it induces the firm to offer more for a sale in the market. तो जैसा कि हमने शॉर्ट्स में भी पढ़ा था कि अगर मार्केट में फेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि लेट सपोज कि अगर मार्केट में प्राइस अभी ज्यादा चल रहा है, 10 रुपए चल रहा है एक कमोडिटी का प्राइस, जो कि जनरली 8 होता है, तो प्रोड्यूसर 10 रुपए प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, ज्यादा गुड्स बेचना चाहेगा। क्यों? बिकॉज जनरली उसको 8 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी को बेचेगा। द सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। सो एज वी रेड इन चैप्टर 1, जहाँ पे हमने पीपीसी पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था दैट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो ऑन द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज एज वेल। तो वो अदर कमोडिटीज क्या है? एक है सब्स्टिट्यूट गुड और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस का इफेक्ट हम गिवन गुड की सप्लाई पर देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर विद इक्वल ईज। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी। एज अ रिजल्ट, the firm shifts its limited resources from production of the given commodity to production of other goods. So let's take two goods, shoes and sandals. So if the price of substitute good, let's say sandals. So sandal is a substitute good, right? It goes up. Producer would be willing to produce the substitute good, means they would be willing to produce sandals instead of shoes. So they will shift their production from shoes to sandals because at that time they are finding it is profitable. सो बेसिकली मतलब ये है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो गिवन गुड की सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज प्रोड्यूसर सब्स्टिट्यूट गुड को प्रोड्यूस करना चाहेगा, and vice versa. The next is complementary goods. So they are the goods which can be used together. So if the price of complementary good, let's say jam, goes up, producer would be willing to produce a given good, that is bread. Why? Because they are complementary good. So bread क्या है? given good. jam क्या है? complementary good. jam का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो bread की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। The third one is price of factors of production, means inputs. As we all know, inputs are factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. For example, suppose for making masala of noodles, firm need various inputs like they need machine, they need labor, and when price of one or more input rises, so producing masala for noodles will become less profitable and firm supply fewer masala of noodles. So if price of one or more of these inputs increase, then cost of production also increases, and this decreases the profitability of the firm. As a result, seller reduces the supply of the commodity, means he is supplying less than before at the prevailing price. On the other hand, decrease in price of factors of production or inputs increases the supply due to fall in cost of production and subsequent rise in profit margin. Thus, change in price of inputs influence the supply of a product in the market. The fourth determinant is state of technology. Technology is a sum of techniques, skills, methods and processes used in production of goods and services. Technological changes influence the supply of a commodity. If there is an improvement in production technology, means if we are using advanced and improved technology, then it is possible for the firm to produce more with the given resources. In such a case, cost of production will reduce, and this makes production of the product more profitable and it induces the seller to increase the supply. However, if we are using outdated technology, means technological degradations, then cost of production would increase and it will lead to decrease in supply. For example, अगर 10-12 लेबर मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड अब हमने 6 लेबर की कॉस्ट पर एक मशीन खरीद ली, विच मीन्स हम 4 या फिर 6 लेबर की कॉस्ट हमें नहीं देनी पड़ रही है। सो कॉस्ट क्या हुई प्रोडक्शन की, वो फॉल हो गई। तो हमने मशीन ले ली जो कि एक न्यूअर टेक्नोलॉजी थी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, हमने वो ले ली। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो कम हो जाएगी
और जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है। द फिफ्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसको हम टैक्सेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस करती है सप्लाई किसी भी गुड या फिर सर्विस का। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट रेजेस द रेट ऑफ एक्सरसाइज टैक्स, देन द सेलर हैज टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट. Increase in taxes raises the cost of production, and this will reduce the supply due to lower profit margin, and decrease in taxes reduce the cost of production, and this will increase the supply due to higher profit margin. On the other hand, if government gives a subsidy to the seller on the sale value of the product, then the seller can sell the same quantity at a lesser price than before. The subsidies reduce the cost of production, which will encourage the producers to produce and supply more. जैसे कि जो खादी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, और जो लिक्विड बनाते हैं, जो टोबैको प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या करती है, टैक्स को रेज कर देती है, सो दैट इनका प्रोडक्शन कम हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है उन लोगों का। सिक्स्थ डिटर्मिनेंट इज गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. द गोल ऑफ द फर्म आल्सो डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. तो फर्म का गोल क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, या फिर वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है, मीन सेल्स मैक्सिमाइजेशन. हाउएवर, गोल ऑफ एवरी फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हम सबको पता है, लेकिन फर्म अदर ऑब्जेक्टिव्स भी कंसिडर करती है. जनरली क्या होता है, जो सप्लाई है कमोडिटी की वो इंक्रीज होती है कब, जब हायर प्राइसेस होते हैं, एज इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ profit maximization. However, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profits. They may like to maximize the sales in order to gain status or prestige in the society. So the objective of such firms is to capture extensive markets and to enhance their status and prestige. So they may be willing to sell more even at those prices which do not maximize their profits. If this is the goal, they may produce and sell more. So we are done with the determinants of individual supply. Now we will focus on determinants of market supply. So market supply is influenced by all the factors which affect individual supply as well. In addition, it is also affected by the following factors. For example, the number of firms in the market. So when the number of firms in the industry increases, market supply of that product also increases due to large number of producers producing that commodity. However, market supply will decrease if some of the firms start leaving the industry due to losses. Second determinant is future expectation regarding price. If sellers expect a rise in price in near future, then current market supply will decrease in order to raise supply in future at higher prices. However, if the sellers fear that the prices will fall in the future, then they will increase the present supply to avoid losses in future. The third determinant is means of transport and communication. So proper infrastructural development like improvement in the means of transportation and communication helps in maintaining adequate supply of the commodity.